हेलो स्टूडेंट्स, so today we are here with the two sample t test. So two sample t test को हम बहुत सिंपल वे में समझेंगे आज, राइट? और उसका हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे टू मेक यू बेटर अंडरस्टैंड, राइट? सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस. सो टू सैम्पल टेस्ट में आपको क्या करना होता है? सिंपली आपको दो सैम्पल्स दिए होते हैं और उनके मीन्स को कंपेयर करना होता है. सो दिस कंपेयर्स टू ग्रुप्स एंड हेल्प्स अस टू टेस्ट वेदर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन द टू मीन्स और नॉट. तो हाइपोथेसिस बनाने का लॉजिक सेम है. नल हाइपोथेसिस आपका क्या होगा कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू मीन्स. इसका मतलब म्यू 1 एंड म्यू 2 आर इक्वल. करेक्ट. सो H1 दैट इज योर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू मीन्स, जैसे कि हम करते हैं वन सैंपल टेस्ट के लिए. दैट इज म्यू 1 इज नॉट इक्वल टू म्यू 2. आप वर्ड्स में भी लिख सकते हैं कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, देयर इज नॉट अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, और आप चाहें तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं, राइट? सो H0 इज योर नल हाइपोथेसिस, दैट इज देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू मीन्स. करेक्ट. वर्ड्स में भी लिखिए और फिर सिंबल में लिख दीजिए कि दे आर इक्वल्स. का मतलब तो यही हुआ ना, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस. और ऑल्टरनेट क्या है? देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू मीन्स. नाउ द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल. जैसे टी के लिए हम एक्स बार माइनस म्यू करते हैं, इसमें सैम्पल 1 मीन माइनस सैम्पल 2 मीन करते हैं. दोनों मीन का वैल्यू हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, करेक्ट, अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस इन द मीन्स. और उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला है हमारे पास, तो वो हम यूज़ करेंगे. तो केस 1 और केस 2 दो केसेस हैं जब वेरिएंसेस आर एज्यूम टू बी इक्वल एंड वेरिएंसेस आर नॉट. सो हमारे पास फॉर्मूला है, टू केसेस हैं, सो वेरिएंस इज एज्यूम टू बी इक्वल. सो व्हेन टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स आर एज्यूम टू बी ड्रॉन फ्रॉम पॉपुलेशन विद आइडेंटिकल पॉपुलेशन variances, then this is the formula, that is x1 bar minus x2 bar, that is the difference of the two means. SP is a pooled mean, that is standard deviation. So उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, and then we have root 1 upon n1 plus 1 upon n2. So यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ये हम बहुत कम केसेस में यूज़ करते हैं. In fact you don't have the numericals based on this as such. We will be taking the case when the variances are assumed to be unequal. तो फर्स्ट फॉर्मूला आपको बेसिकली याद रखना है फॉर द कैलकुलेशंस और फॉर द MCQ, स्पेशली द थ्योरी पार्ट. जो हम मोस्ट ऑफ द केसेस में हम यूज़ करते हैं, वी एज्यूम दैट द वेरिएंसेस आर unequal, right? So difference of the means upon root of s1 square upon n1 plus s2 square upon n2. Now degree of freedom निकालने के लिए there are two formulae, n1 plus n2 minus 2 and also this big formula that you have. ये फॉर्मूला आपको सिर्फ उसी केस में यूज़ करना है अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिया गया है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम आप निकालिए. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द वैल्यूज जो आपको क्वेश्चन में दी जाती हैं, दे विल मैच विद द डिग्री ऑफ फ्रीडम यूजिंग द फॉर्मूला n1 plus n2 minus 2. और जो आपके पास कंक्लूजन का स्टेटमेंट होता है कि वेदर यू रिजेक्ट और एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, वो सेम कंडीशन है which you have for one sample test, that is your calculated t value has to be greater than the t given value, and then if it is the case you can reject the null hypothesis, that is there is a significant difference between the two means. Rejection का मतलब there is a significant difference between the two means. Same t value is greater than the t critical value. Critical means the value which is given for the level of confidence and the degree of freedom जो आपको given रहती है. Correct? So this is how we go for it. Now let's start with this. Now let's take the numericals for better understanding. So two methods of performing a certain operations are compared. The following data are obtained. So n1 n2 हो गया आपका सैम्पल साइज, x1 बार x2 बार हो गया मीन दोनों सैम्पल्स का, s1 स्क्वायर और s2 स्क्वायर आपका हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर. सो आपको 5% कॉन्फिडेंस लेवल पे कैलकुलेट करना है. यहाँ पे T25 पे 0.05 का वैल्यू दिया है, राइट? तो 25 का मतलब आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 25. करेक्ट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस. तो आपके पास H0 दैट इज x1 बार mu1 is equal to mu2, that is there is no significant difference between the two means. H1, that is alternate hypothesis, mu1 is not equal to mu2, that is there is a significant difference between the two means. Between the two means, correct?
Now let's calculate the values. So degree of freedom हमारे पास क्या आएगा, n1 plus n2 minus 2, which is 15 plus 12 minus 2, which is 25. उसके लिए हमें वैल्यू दिया गया है. हमारा अल्फा क्या है, 0.05, द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस वी आर गिवन विद दैट. Now we have to use the formula which I gave you. Now here the standard deviations are different, so variances also are also different. So we use the formula, the second formula which I gave you, x1 bar minus x2 bar upon root of s1 square by n1 plus s2 square by n2. करेक्ट, एक सिंपल फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं. सो लेट्स यूज़ इट. सो व्हाट इज़ गिवन. अब यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा देखिए कि अगर आप चेक करें तो आपके पास x1 बार इज लेस देन x2 बार, तो आप डिफरेंस जो लेते हैं वो अकॉर्डिंग टू द डिफरेंस लेते हैं कि आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है. सो आप इसको सिंपली चेंज कर सकते हैं. ये पूरा डेटा आपका बन सकता है किसके फॉर्म में, द फर्स्ट वन, and this can be the data for the second sample also, or otherwise you can take the answer in negative also. So it's up to you how you want to solve it. Correct. So let's go for it. So अगर हम चेंज कर लेते हैं अपना वैल्यू, सो 57 माइनस 2 और 50.5 ले रहे हैं, तो हम ये इसको फर्स्ट डेटा मान रहे हैं, इसको हम सेकंड डेटा मान रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही अब हम यूज़ करेंगे पूरा डेटा. रूट. Now this is your s1 s2 square, we are taking it as s1 square. So now we have here 5.7. नाउ इसके नीचे हम इसी का 12 लिखेंगे. इट डजेंट मेक अ डिफरेंस इन एडिशन एट ऑल स्टूडेंट्स, राइट. s1 स्क्वायर बाय n1 लिखें आप, चाहे s2 स्क्वायर बाय n2 लिखें, सो इट डजेंट मेक अ डिफरेंस. सिर्फ हमारे पास जो न्यूमरेटर है दैट मेक्स अ डिफरेंस. आप चाहे तो माइनस से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आंसर पे डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि हम एब्सोल्यूट वैल्यू से कंपेयर करते हैं दोनों वैल्यूज. दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, सो 9.5 का स्क्वायर अपॉन 50 पॉइंट, सॉरी 15. Correct. Right, so this is what we have. थोड़ा decimals में है, it's okay. Now here what do we get, 6.7, and here what do we get, 5.7 का square upon this, so 60 अगर हम LCM ले लें 15 और इसका, so what do we get, 12. Let's do the calculation. So 5.7 square into this, so we get 162.45. 9.5 square into 4, we get 361. Correct. So what do we get, 6.7. Now we add up and go for this. So we get 5 to 3.45. Correct. 160. Now if we calculate this, what do we get, 8.724. और अगर हम फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज आ जाएंगी दैट विल गिव यू द फाइनल आंसर. ओके, सो नाउ इट्स अराउंड 3. करेक्ट. सो 6.7 को हम 2.95 से अगर डिवाइड करेंगे वी गेट 2.2711. Now this value is going to be compared with, this is your t calculated. Now t calculated, if we see, it is coming greater than the t 25 0.05, right? So we reject the null hypothesis. What do we write? We reject the null hypothesis. And as we reject the null hypothesis, what will be our final statement? Is there a significant difference? Yes, there is a significant difference in the mean. Final statement is very important. So there is a significant difference in the mean of the two methods, right? So this is how we go for the question. So calculations थोड़ा सा आपको hard लग सकता है. I took the decimal point because to make you better understanding कि but formula is not so big. आप जहाँ तक कैलकुलेशन कर सकते हैं करिए. After that point you can leave it. At least you will get out of 3, you will get definitely 2, 2.5 depending on the place where you leave it. Correct. Now let's move on to the next. स्ट्रेंथ टेस्ट एक आपने लिया, 2 यार्न्स है आपके पास, सो यू हैव टू गो फॉर दैट. सो द स्ट्रेंथ्स आर एक्सप्रेस्ड इन kgs. करेक्ट. सो व्हाट डू वी हैव हियर, सैम्पल मीन दिया है, सैम्पल साइज दिया है आपको, सैम्पल वेरिएंस दिया है. करेक्ट. सो वी हैव टू गो फॉर दिस. नाउ सैम्पल मीन इज गिवन 9 4 and 9, सैम्पल साइज इज गिवन 50 and 42, 42 and 56. Correct. So now let's calculate. So again, what will be your null hypothesis? Null hypothesis will be mu1 is equal to mu2. That is, there is no significant difference between the two means. Correct. Null hypothesis will be what?
mu1 is not equal to mu2, that is there is a significant difference. There is a significant difference between the two means. Okay, so this is how we write it. Now let's move on with the question. So here your degree of freedom, sample size आपको कितना दिया है 50 and 42, correct? So 50 plus 42 minus 2, so what do you get here? 92 minus 2, that is 90. Okay, यहाँ पे values is given wrong, so let's take the right value from the table. Just give me a time. So here we get up with, see, बहुत सारी values जो होती है degree of freedom में वो repeat होती हैं. So let me check. So P90 is given for 0.05, 1.662. Okay, so let's use this value. 1.662. Okay, now let's use this value and compare with this. Now let's find out the answer. So again, we use T, x1 bar minus x2 bar upon root of s1 square by n1 plus s2 square by n2. Okay, now let's go for this. So we get here 9 minus 4, and here we get रूट 4 माइनस 9 भी आप लिख सकते हैं, आपको एब्सोल्यूट वैल्यू से कंपेयर करना है. आई रिपीट अगेन एंड अगेन. ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट पार्ट. क्लियर? s1 स्क्वायर और n1 स्क्वायर किसको लेना है? फिर जब आपने वैल्यूज ऊपर चेंज किया, डजंट मैटर एट ऑल, बिकॉज इसमें एडिशन करना है. सो लेट्स गो फॉर दिस. सो व्हाट डू वी गेट हियर? सो वी गेट सैम्पल वेरिएंस दिया है. यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन हमने क्यों लिया है, यहाँ पे वेरिएंस दिया है. एंड वी नो हमें चाहिए होता है स्टैंडर्ड डेविएशन. सो स्टैंडर्ड डेविएशन का और वेरिएंस का क्या रूल है? द रूल इज कि वेरिएंस का स्क्वायर रूट इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर क्या बन गया? इन फैक्ट वेरिएंस, करेक्ट? सो नाउ हियर दिस इज 42 and 56. So basically this is s1 square and this is s2 square, correct? So we don't have to calculate anything. यहाँ हमें स्क्वायर रूट लेना है. वेरिएंस, रिमेंबर, standard deviation is square root of variance. So standard deviation का square is nothing but equal to variance. यहाँ पे भी variance are unequal, so we go for this. Now let's go for this. So we have here 42 upon 50 plus 56 upon 42, right? ये simple question है. Now let's go for this. So 5 upon 50 and 42 here we have. We can reduce it further. 21 upon 25. Here we have 28 upon 21. Right? So if we take the LCM for this, we can get 2100. And if I solve it, I'll get 7764 plus. Now if I multiply by 100, I get 2800. And if I solve it, simply 2100 ka root will go here. And if I add the numbers, I'll get it 4564. Let's keep it down only root hai to. Right? So this is what we have. Now if we just cut it, so 4200, so 2 point something will come. So now 2.173, correct? So now we have to take the root. उसके लिए long division is very important, just remember that. Okay, so it's around 1.9614 का होता है, so 1.474. Now if I go with this and divide it, what do I get? 2.873. Right? So now here the value has to be compared with 1.662. So your calculated value T ka is greater than T 90.05. That is 2.873 is greater than 1.662. So there is a significant difference. So we reject the null hypothesis and say that there is a significant difference between the means of the two yarns, correct? So this is what we have, right? So mean मतलब किसका, यहाँ पे हमने क्या कंपेयर किया? स्ट्रेंथ. तो दोनों यार्न के स्ट्रेंथ में डिफरेंस है, करेक्ट? दैट इज व्हाट वी मीन. So this is how do we go for it. Now let's go for the next question. Now sample of two types of electric bulbs. So हम किसके लिए टेस्ट कर रहे हैं? लेंथ ऑफ लाइफ, किसकी लाइफ ज़्यादा है? ओके, मीन लाइफ. So now here sample size is given 8 and 7. So let's
go for this. So H0 is mu1 is equal to mu2. There is no significant difference in the means of the length of life. And H alpha or H1 says there is a significant difference between the mean of the length of the life of two bulbs. Correct? So now degree of freedom is 8 plus 7 minus 2, that is 13. वो वैल्यू हमें दिया गया है. Right? Now let's calculate t. Now I think it's clear to everyone how to calculate these questions. So s1 square upon n1 plus s2 square upon n2. देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो बड़ा वाला फॉर्मूला है वो हाफ ऑफ द फॉर्मूला का जो वैल्यूज है वो इसी फॉर्मूले से आती है. तो इट्स नॉट टू हार्ड ऑल्सो. करेक्ट. नाउ लेट्स गो. 1134 minus 1024. सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन दिया तो यहाँ पे हमें स्क्वायर करना पड़ेगा. सो 35 स्क्वायर अपॉन 8, 40 स्क्वायर अपॉन 7. Okay. If we subtract the 2, we get 110. Now 35 square and this we have to calculate, so 56. So 35 square into 7 we have to do, so we get here 8575. 1600 into 8 we have to do, so we get 12800. Correct. So 110 root 21375 upon 56. Now if we divide it, दिस पार्ट टेक्स टाइम थोड़ा सा. सो आपको एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड आना चाहिए अच्छे से. हाउ टू फाइंड द रूट्स, दैट हैज़ टू बी डन. नाउ 361 19 का है, 381 इज इन बिटवीन 361 एंड 4. थोड़ा सा आप डेसिमल्स इधर उधर कर सकते हैं, आपके फाइनल आंसर पे उतना इफेक्ट नहीं आएगा स्टूडेंट्स. ओके, सो जस्ट टेक केयर ऑफ दैट. सो दिस इज अराउंड 5.63. So this is t calculated and this has to be compared with this value. So t calculated is greater than t critical value given to you, that is t 13 point. So 5.63 is greater than 2.16. So we reject the null hypothesis and we give that there is a difference in the mean of the life of the two bulbs. So is the difference in the mean significant? Yes, the difference is significant. Okay, that line is important. I'm repeating again and again. Yes, the difference is significant. Okay, so this was for the two sample test. I hope it is clear to everyone. So do like, share and subscribe. Thank you everyone.